In previous class, we recall some properties and some arithmetic operations on complex number. So today I will start with some definition which will be the useful and we will use it several times in our further topics. So let's start it. So first is generally how we will define some geometry in complex plane. First of them is circle. Let S be a non-empty set. Let S be a non-empty set of complex numbers and let Z is a fixed point in this set. Z is a fixed complex number belongs to this set and delta is a positive real number. Delta is a positive real number. Okay. So circle generally in C is set of the point. Circle in a complex plane is in general a set of points satisfying the equation set of points satisfies the equation mod of z minus z naught is equal to delta. Mod of z minus z naught is equal to delta. You know that j is here a variable point and z naught is a fixed point, and j is denoted here by j is equal to x plus iy, and you know that distance between 2 points is given by mod of z1 minus z2. So this mod of z minus z naught means it is under root x minus, if z is x defined as x plus iy, so z minus mod of z minus z naught is x minus x naught square plus where this z naught is a complex number, so it can be written as x naught plus I times y naught. So modulus of z minus z naught is under root x minus x naught square y minus y naught square is equal to delta, or this can also be written as x minus x naught square y minus y naught square is equal to delta square. So it is a circle whose center is x naught comma y naught and radius is this delta. Okay, so it means that circle in C plane, जैसा हमें पता circle is a C plane, is the point, it is collection of the point lie on the boundary of a circle. It is collection of point which is lie on the boundary of a circle whose center is this z naught. This center x naught y naught को हम xy plane में point से denote कर रहे हैं. So it is the center in complex plane is at the point z naught. It is the z naught and radius of this circle is delta. Z is the point lie on this boundary. ये एक variable point है. तो जितने भी points satisfy करेंगे इस equation को, they must lie on the boundary of this circle. अब इसी को अगर हम polar form में लिखना चाहें, so you know that polar form में क्या करते हैं, r e I theta के form में लिखते हैं, where r is the radial vector of this point z and theta is the inclination of this radius vector in positive direction with x-axis. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है z minus z naught is equal to delta. So this it means that ये r जो होता है वो होता है modulus of z. It means that radius is delta here, z minus z naught. So we can write z minus z naught. We can write z minus z naught इसी से
z minus z naught is delta times ei theta, where this theta revolve, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे अगर ये सर्किल डिनोट कर रहा है, थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to 2 pi, थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to 2 pi, थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 2 pi. So polar equation of the circle whose center is z naught and radius is delta can be write as j is equal to j naught plus delta ei theta, where this theta lies between 0 to 2 pi, and it always, this theta always lie in काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या कहें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड इफ दिस z naught is 0, if this z naught is 0, so equation, polar equation for circle will be z delta ei theta. It means that it is representing a circle whose center is origin, z is equal to 0 and radius is delta, and this can also be defined like this: mod z is equal to delta. So mod z is equal to delta is defining a circle of radius delta about this point, about the origin. Okay, तो एक तो ये सर्किल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. सेकंड इज ओपन डिस्क. Open disk. So open disk is set of the points. It is set of all the point, set of a collection of points satisfies, which satisfies the inequality, yeah, satisfies z minus z naught less than delta. सर्किल में क्या था? collection of the all the points lying on the circle, but open disk is collection of all the z which lie inside this circle. सर्किल के अंदर जितने भी, ये मान लीजिए ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू डेल्टा, इट मींस दैट ये जेड नॉट जो सेंटर पे है और वेरिएबल पॉइंट जेड ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस हमेशा इज इक्वल टू डेल्टा है. बट हियर वी आर collecting the point z, all those point of z whose distance from this z naught is less than delta. अगर ये डिस्टेंस हमारी डेल्टा है तो इससे लेस जितनी भी डिस्टेंस है ऑल द जेड, यहाँ पे जितने भी जेड हैं इसके अंदर ऑल दिस जेड एक्सेप्ट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पॉइंट्स को केवल छोड़ दिया है. सो इट इज कॉल्ड ओपन डिस्क. इट इज कॉल्ड ओपन डिस्क. सो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस equation mod z minus z naught less than delta, define the open disk of radius delta and center for this open disk is z naught. Okay, same way closed disk. So closed disk will be the set of all the point which satisfy mod z minus z naught less than or equal to delta. If we are including in the open disk the point lie on the boundary of this circle z minus z naught is equal to delta, तो इन पॉइंट्स को जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं और इनसाइड द पॉइंट है उनको भी इंक्लूड कर लें तो दिस डिस्क इज कॉल्ड क्लोज्ड डिस्क. सो ऑल द पॉइंट्स विच satisfying mod z minus z naught less than or equal to delta is called closed disk with center z naught and radius is delta. Okay, next is annulus. Annulus is set of the points which lies between concentric circles. For suppose here we are taking two circles C1. Equation of this circle is z naught is equal to R1, and another circle C2 is defined as z minus z naught. Concentric circle is, so center will be same, is R2. Okay, say that C1 is inner circle and C2 is outer circle. It is like that. Z naught is a point. It is R1. This is C1 circle and
this circle is, whose radius is r2, center is z0. So the point which lies between these two circles, ये जो circles के बीच में जो points lie कर रहे हैं, all the points lies between these two circles, they form a set which is called annulus. So all the z minus z0 greater than r1, because on this circle, inner circle c1, इस पर जितने भी z हैं उसकी distance z0 से है r1. So we are taking the point above this circle and inside outer circle. So distance of z minus z0 must be greater than r1 and less than this r2. So the z, all collection of all those z was satisfying this condition or inequality. So all that z which satisfying this inequality is said to be annulus. It is called annulus. And if this z satisfying inequality less than or equal to z minus z naught is mod of z minus z naught is greater than or equal to r1 and less than or equal to r2, यानी कि बाउंड्री के पॉइंट्स भी इनमें हम इंक्लूड कर दें तो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड एनुलस. क्लोज्ड एनुलस. और इफ इसमें से किसी भी एक बाउंड्री के पॉइंट हम लीव कर देते हैं, फॉर सपोज इफ वी आर टेकिंग z is greater than r1 and less than or equal to r2, or z minus z naught is less than r2. Either this form or this form satisfy कर रहा है अगर हमारा ये z inequality में. So this type of annulus is neither open nor closed. So it is called the annulus which is neither open nor closed. Okay. So next is neighborhood of a point. जिससे हमें पता था रियल लाइन में पढ़ते थे नेबरहुड क्या होता था, एक पॉइंट x नॉट होता था, इसका नेबरहुड इस ओपन इंटरवल लेते थे. वैसे यहाँ पे एक ओपन डिस्क विल फॉर्म द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. सो नेबरहुड ऑफ पॉइंट say that P is a point. P is a point in complex plane. So a delta neighborhood of this point z naught in complex plane is set of all the point z is set of all points z lie in open disk. जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो एक ओपन डिस्क अबाउट दिस पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके नेबरहुड में होंगे. तो दिस ओपन डिस्क इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ दिस z नॉट. सो neighborhood of this point z naught in complex plane is set of all those z which lie in open disk about this point z naught and radius is delta. Radius of this open disk is delta. It means that it lie in the open disk mod z minus z naught less than this delta. So it is called delta neighborhood of this point P. Generally we denoting this delta neighborhood by n delta P. इस तरह से भी डिनोट करते हैं, डिनोटिंग नेबरहुड डेल्टा, इसी को बोल रहे हैं, इसी को यहाँ पे नेबरहुड ऑफ दिस P अबाउट दिस P ऑफ रेडियस डेल्टा. ओके. एंड इफ इन दिस नेबरहुड, आपको पता है ये मॉडुलस क्या बताता है, अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है जनरली. सो इफ वी आर एक्सक्लूडिंग a point z naught from this open disk, you can see here in this open disk नेबरहुड के पॉइंट z भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं और ये पॉइंट z नॉट भी इसके अंदर लाई कर रहा है. इफ वी आर एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट z नॉट फ्रॉम दिस ओपन डिस्क, इफ वी रिमूव or exclude this point from this open disk, then this neighborhood is called deleted delta neighborhood. This neighborhood is called then deleted delta neighborhood of this point z naught.
So if we exclude, if excluding are deleting the point, if excluding the point z naught from this open disk या कहें delta neighborhood of P, then it is called deleted delta neighborhood of this point P, which is written as z minus z naught less than delta. ये delta neighborhood बता रहा है. अगर हम यहाँ से z naught point हटा देंगे तब इस पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन आएगा. अगर ये पॉइंट z naught हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ओपन डिस्क से, देन इस इक्वेशन में क्या चेंज होना चाहिए. You know that modulus is always representing a positive number. It is always greater than or equal to 0. Its value is always greater than or equal to 0. When z is equal to z naught, then its value will be 0. But if we are excluding this point z naught from this set, so obviously value of this mod of z minus z naught is always greater than 0. It is always greater than 0 because it will be 0 only when z is equal to z naught. So z will be never z naught because we are excluding here this point z naught. So its value is always greater than 0 and less than this delta. So it is denoting deleted delta neighborhood of this point z naught. Next is interior point. Interior point. Okay. So a point z is said to be interior point of set S. A point z is said to be a point z is said to be interior point of a set S if all the points of some neighborhood, all the point in some neighborhood, in some delta neighborhood of this z, delta neighborhood of this z lies inside this S. Inside this S, then we can say that Z is interior point for this delta neighborhood, is interior point for this set S. For suppose that our set is a open disk. For suppose that our set is a open disk about this point Z naught of radius delta. It is an open disk. Boundary के points यहाँ पे excluded है. These points are excluded. Okay. इस तरह से ये पॉइंट इसके मेंबर नहीं है, केवल पॉइंट जो लाई कर रहे हैं इस साइड, दैट्स आर द मेंबर. सो इफ z is called interior point for this set S, this is the set which is denoted by open disk. So j is called, this z is called interior point of this S if some neighborhood of this z naught, it means that there exists a neighborhood of this S naught. या इसको कर लेते हैं डेल्टा नेबरहुड, इसको बोल रहे हैं तो इसको आर बोल देते हैं, आर डिस्टेंस बोल देते हैं. सो दिस पॉइंट जेड whose डेल्टा नेबरहुड, तो इसका जो डेल्टा नेबरहुड है इसका हर एक पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट ऑफ दिस डेल्टा नेबरहुड ऑफ दिस जेड
is lie inside this S, so Z is called interior point. Otherwise, it will be not the interior point of this S. So Z will be the interior point of this S if there exists a neighborhood, delta neighborhood of this Z. All the point in this neighborhood lie inside this S. Okay, next is exterior point. Interior point, then exterior point. Exterior point. A point Z is said to be exterior point of this set S if all the point in some delta neighborhood of this Z lie outside of S. For suppose that यहाँ पे एक point J ले लें, यहाँ पे एक point Z ले लेते हैं, and we are considering a delta neighborhood, any delta neighborhood. अब यहाँ delta की value कुछ भी हो सकती है, different हो सकती है. So if we are considering a delta neighborhood about this point Z, if all the point in this neighborhood lie outside of this set S, so this point Z is called exterior point for this S. So a point Z is exterior point for a set S if all the point in some delta neighborhood of this Z lies outside of this S. Next is boundary point. Next is boundary points. So boundary points, for suppose here we are considering a closed disk. It is a closed disk. Say that it is Z minus Z naught less than or equal to R. It is a closed disk. For suppose it is here a closed disk. So a point Z is said to be boundary point of this S if every delta neighborhood of this Z, contain at least one point of this set S, say that it is set S. So a point Z is said to be boundary point for this set S if every delta neighborhood of this point Z contain at least one point of this S and at least one point outside of this S. अब यहाँ पे देख लीजिए बाउंड्री पे मान लीजिए ये Z है हमारा, इसका कोई भी हम नेबरहुड कंसीडर करें, however be small or however be large, so this neighborhood must contain at least one point which lie inside this S and at least one point lie outside of this S. So all these collection of point is called boundary points. So boundary point of the set S is a point Z is called the boundary point of the set if every neighborhood of every delta neighborhood of this Z contain at least one point of this S and at least one point which is lies outside of this S. Okay. Next is open set. What is the open set? Open disk is one of the example of open set. So a set is open if every point of S is interior point. जिसके अंदर बाउंड्री पॉइंट नहीं है, केवल इंटीरियर पॉइंट जिस सेट के अंदर है, दैट काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड ओपन सेट. लाइक आवर open disk Z minus Z naught less than R, it is a open set. R we are considering, for suppose we are considering here all those Z like real part of this Z is less than 0. Real part of Z is less than 0. कैसा होगा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है. रियल जेड यहाँ लाई कर रियल जेड इज लेस देन 0. इट मींस दैट ये पार्ट लेस देन 0 और यहाँ पे क्या है रियल जेड इज इक्वल टू 0. तो इस लाइन को यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया. बाउंड्री पॉइंट्स केवल ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किए इस सेट में. सो इट इज अ ओपन सेट. आर वी कैन टेक एनुलस, जैसे एनुलस ले लेते हैं. For suppose we are taking here the annulus. This is the annulus about origin and lies between radius is mod of Z is greater than 1 and less than 2.
So this annulus is also representing an open set. It is also an example of open set. So open set is the set in which every point of this set is interior point. Closed set, if we are including here the boundary points also, अगर यहीं पे हम इक्वल टू आर कर लें, यहाँ पे इक्वल टू लगा ले जीरो, यहाँ पे ये इक्वल टू कर ले, so all these will be becomes the example of closed set. This will become the example of closed set. So closed set, if every boundary point of S belongs to this set S, so that set is called closed set. Next is bounded set. Bounded set. Bounded set. Open set is said to be bounded. Open set is open set S is bounded if there exists a positive real number M such that mod of Z is always less than or equal to this M, less than or equal to this M for all Z belongs to this S. S के अंदर जितने भी Z हैं उनका मॉडुलस is always less than or equal to this M. If this type of positive real number exists for any set, then we say that set is bounded and it is bounded by M. जैसे हमारे पास ओपन डिस्क हम यहाँ पे ले रहे हैं, Z minus Z naught less than R. So you can see here इसकी जो वैल्यू है एवरी जेड कैन नॉट बी, इसकी माइनस जेड नॉट जितनी भी यहाँ पे ओरिजिन इसको ये लिया है, सो दिस वैल्यू ऑफ दिस जेड कैन नेवर बी एक्सीड दिस आर, सो इट इज अ बाउंडेड सेट. एंड इफ वी आर टेकिंग हियर जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन आर, जेड माइनस जेड नॉट मतलब जेड नॉट जो फिक्स पॉइंट हमने यहाँ पे लिया जेड नॉट, इफ डिस्टेंस ऑफ any variable point z from this z naught is greater than r, this is r, greater than r है तो ये इसके बाहर है, कहीं भी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू ले सकती है, so it is, this set is unbounded set. It is an example of unbounded set. Unbounded set. Okay, next is connected set. Connected set क्या होता है? Or suppose that S is an open set and it is called connected set if we take any 2 points, belongs to this set S and we can join this point by a polygonal line and this line totally lies inside this S, then we say that set is connected. For suppose यहाँ पे हमने एक ओपन डिस्क ले लिया है ऑफ रेडियस आर, दिस इज द ओपन डिस्क ऑफ रेडियस आर. एक पॉइंट Z1 यहाँ ले लिया है, दूसरा पॉइंट Z2 ले लिया है, सो वी कैन ज्वाइन Z1 Z2 बोथ बिलोंग दिस सेट इनसाइड दिस सेट S, एंड इफ वी कैन ज्वाइन दिस Z1 एंड Z2 बाय अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह की लाइन से हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलीगोनल लाइन या स्ट्रेट लाइन सिंपली. सो दिस लाइन, when we are joining these 2 points by a line, this line totally lies inside this S. It means that every point on this line is interior point for this S. कोई भी हम ऐसा मान लीजिए कोई और टाइप का यहाँ पे कर्व बना रहे हैं, ये जो पॉइंट इसके अंदर है ये इसके अंदर लाई नहीं करते हैं, दिस पॉइंट ये जो हमने ये शेडेड पोर्शन है, इट इज डज नॉट लाई इनसाइड दिस सेट S. सेट S इज द बिटवीन ये जो आउटर कर्व एंड इनसाइड द कर्व बिटवीन जो पॉइंट्स है, these are the points of this set S. For suppose that here I am considering a point Z1 and another point Z2 here. So if it is possible to join these 2 points by a polygonal line, for suppose यहाँ पे इस तरह से मैंने ज्वाइन की लाइन को, so the line this is the polygonal lines means
a line which is formed by joining finite number of straight lines, which is obtained by joining the finitely many straight line segment. So Z1 and Z2 इसको इस तरह से हमने ज्वाइन किया है. So this line totally polygonal line totally lie inside this S. So this set S is called, this set S will be again a connected set. Next is domain. Domain means an open and connected set is called domain. Open and connected set is called domain. Open and connected set is called domain. डोमेन. अभी इतने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स बताए ज्योमेट्री से. डोमेन का कोई एग्जांपल बता सकते हो? गिव मी द एग्जांपल ऑफ डोमेन. आरव. अभिजीत. अभिनव. अभिषेक. यस मैम. क्या होगा डोमेन का एग्जांपल बताओ. मैम डोमेन जो सेट एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे. नहीं, मैंने कहा ओपन एंड कनेक्टेड सेट इज डोमेन. अभी हमने कई सारे एग्जांपल्स दिए, कनेक्टेड के भी दिए, ओपन सेट के भी दिए. तो उनमें से कौन सा ऐसा ज्योमेट्री है जो कनेक्टेड कह सकते हैं, जिसको डोमेन बोल सकते हैं, जो ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो? आदिति. मैम ओपन डिस्क. यस, ओपन डिस्क. So open disk is here, open and connected set. या हम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन का लें, ये भी हमारे पास क्या है, ओपन एंड कनेक्टेड. ओके. नेक्स्ट इज रीजन. रीजन. रीजन इज अ डोमेन. रीजन इज डोमेन, मतलब एक सेट है जिसको हम कह सकते हैं डोमेन. इसको सिंपली बोले, सो रीजन इज अ डोमेन टुगेदर विथ ऑल सम आर नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स. मतलब डोमेन में अगर हम कुछ केवल सिंपल डोमेन है तो भी वो रीजन कहलाएगा. अगर डोमेन में हम ऐड कर दें कुछ बाउंड्री पॉइंट या ऑल द बाउंड्री पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड द रीजन. It means that open disk, closed disk, annulus, open or closed annulus, all are the example of reason. उनको हम रीजन बोल सकते हैं. यानी कि एवरी डोमेन इज रीजन, बट एवरी रीजन इज नॉट अ डोमेन. क्योंकि अगर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर देंगे तो वो ओपन नहीं रह जाएगा, और ओपन एंड कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड ऑन डोमेन. नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन. एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन. Extended complex plane. Okay, if in the complex plane we include only a point z is equal to infinity, for suppose C is denoting the complex plane, and when we are connecting a point z is equal to infinity to this plane, complex plane के साथ combining
ये पॉइंट भी ऐड कर दें, z इक्वल टू इंफिनिटी. So this plane is generally denoted by this way, c infinity, and it is called extended complex plane. और z इक्वल टू इंफिनिटी को छोड़ के जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, it is called the finite complex plane. So when we are including this point z is equal to infinity into finite complex plane, so the resultant plane is called extended complex plane. Okay. Next is function of complex variables. Now, functions of a complex variable. Of a complex variable. What do you understand by function in real variables? You have already know about the function. So can anyone give me the definition of function in real line or function of real variable? What do you understand by the function in real plane, real line, on a function which is defined on the real line, or we can say that a function of real variable? Can anyone give the definition of function? फंक्शन क्या होता है बताइए? मैम रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Every relation is not a function. Yes, a function is a... Ma'am, function is a special type of relation in which every element of input element is mapped corresponding to the output element. Exactly definition क्या होती है? किसी को याद है? Ma'am, every element will have only one image in the function. In simply कह सकते हैं function is a rule or a relation between two set. For suppose that it is set A and another is set B. Okay, so it is a relation or rule between these two set A and B. So by this rule F, we can assign every element of this set A. इस set के अंदर जितने भी element है, we can assign every element of set A to a unique element of B. To a unique element of B. So this rule or relation is called function. Correct? यही होता था function. Yes, ma'am. Okay. So same way in the complex variable also. बस यहाँ पे क्या होगा? This set is replaced by set of complex number. This will be replaced by set of complex number. So here also F is a rule which assign a number. या कहें हम यहाँ पे let S, it is a set of complex number, and S star, it is also another set of a complex number, and both the set are non-empty, and F is a rule which assign every element of this S to a element of S star. S से S स्टार के एलिमेंट में ले जाते हैं, और ये एलिमेंट मान फॉर सपोज दैट Z इसमें बिलोंग करता है, इस तरह का है FZ, और इसको कनेक्ट करता है, इट इज इक्वल टू W. फॉर ऑल Z in this S, there is a W in S star which is related by FZ is equal to W, or we can say that W is equal to FZ. So this is called the function of complex variable. यहाँ पे ये जो variable है, it is a complex variable, and जो image हमें मिल रही है इस Z की under this F, it is also a complex variable. So this function is called function of complex variable. This S is called here domain of the definition. Domain of definition of this F. This S is called domain of the definition of this F, and when the set S on which this F is defined,
if this set S on which this f is defined is not specified, मतलब s के बारे में मैं पहले से नहीं दिया है कि s ऐसा है, z is less than 3 or any other type. So if s is not defined before, so in that case we will consider the domain where this f is defined, and that domain is called natural domain of the definition, and that domain is called natural domain of the function. For example, if we are here, we are considering a polynomial function. For suppose that we are considering here a polynomial function. So polynomial function, say fz, it is a polynomial of degree n. So we are defining it like a naught zn, a1 zn minus 1 up to an, and because it is a polynomial of degree n, so this a naught cannot be 0. So it is a simple, it is a function of complex variable, and this function is a polynomial. यहाँ पे हमें कोई डोमेन नहीं डिफाइंड है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन, कैन यू टेल मी पॉलिनोमियल फंक्शन किस जेड के लिए डिफाइंड होंगे? ये जो कोफिशिएंट्स है ए नॉट, ए वन, ए एन, दे मे बी रियल भी हो सकते हैं और दे आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट. तो कैन यू टेल मी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो किसके लिए डिफाइंड होगा? मैम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. यस, इट विल बी डिफाइंड. अगर हम यहाँ पे कोई सेट नहीं ले रहे हैं पहले से, सो ये फंक्शन जिस भी जेड के लिए डिफाइंड होगा उसको हम यहाँ पे डोमेन ले सकते हैं, एंड दैट डोमेन इज कॉल्ड द नेचुरल डोमेन. सो नेचुरल डोमेन फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन इज द all the complex number, but it will be not z is equal to infinity. Extended complex plane नहीं होगा, finite complex plane. So whole finite complex plane is natural domain of definition for this function fz. Okay, so this function is defined for all z in C. It will be its natural domain. In the same manner, if we are considering here a rational function, it is of this type, pz upon qz, where this pz is also a polynomial in z, qz is also some polynomial in z. अब हमने यहाँ पे फिर से उस सेट s को डिफाइन नहीं किया, तो what will be the natural domain for this function f? Because rational function is defined for all z except the point where denominator is 0. So here we will exclude all the z where, या कह सकते हैं natural domain for this function f, domain of this function f is collection of all the z, all the complex number z, all the z's, such that z is a complex number, but at this z, qz is not equal to 0. So this will be the domain for this function f. All the z in finite complex plane except the point where this denominator for this function is 0. So it will be the natural domain for rational function. Okay. So you know that when f is a function from complex set S to another complex set S star defined as W is equal to Fz for all Z in S. So this W is called image of this Z under F. This W is called image of this Z under this function F, and Z is called pre-image of W. जैसा नोटिफिकेशन हम पहले से भी जानते हैं, इसके बारे में रियल में भी पढ़ चुके हैं. Okay, as you know that this Z is a complex variable. It is a complex variable because this is the function from complex set to complex set. So W must be a complex variable. It will be must a complex variable. Complex variable ही होगा. If Z is defined like this, x plus iy, Z is defined like x plus iy. So W will be like this, u plus iv. U इसका real, u and v are real. U is real and v is the imaginary part of this W.
but here this u must be function of xy and v is also a function of xy. So here यहाँ पर x और y क्या होता है? They are real numbers, but here this u and v are real valued function of x and y. These are the real valued function of x and y. तो हम अगर बात करें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, so you know that every complex number can be represented in rectangular coordinate system by denoting by a point x comma y. So z is a point here. It is our x-axis, y-axis, and horizon z plane. So z is the point x plus iy. So this z is mapped to w by a function f. तो f मैप करेगा इसको w में. w will be another complex point जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है u plus iv. It is also this because it is a complex number, w is again a complex number, so it is also denoted by a point in rectangular plane whose coordinates are u comma v, whose coordinates are u comma v, where this horizontal line is u and vertical line is v. And ये क्या करेगा? Under f, image of this f is w, so this plane is called w plane. This plane is called, this is called z plane, it is called the w plane. तो f क्या करता है? हर एक z को यहाँ पे एक w में मैप करता है. For suppose that if we are considering here a domain, here we are considering a domain D. So in this domain there will be several points inside this domain D. Domain means open and connected set. So in this domain, say that we are taking a domain D in this z plane. So there are several points inside this domain D, and f will map every point of this D to a point in this w plane. So in the collection of all those w's which are the images of this z lie inside this D will form a set. It will again form a set and we say that it is D star. तो क्या होगा? इस डोमेन D को f कहाँ मैप करेगा? इन D star. So domain of D here is a domain D in z plane is mapped into the region D star. हमने इसको रीजन इसलिए कहा क्योंकि पता नहीं ये ओपन है या कैसा है. तो it will map it in the region D star under this f. So image of this D under this f is D star. अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आ जाता है जो हमने अभी तक रियल लाइन में तो नहीं पढ़ा, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में नहीं पढ़ा. दैट इज कॉल्ड मल्टीवैल्यूड फंक्शन. मल्टीवैल्यूड फंक्शन. Multivalued function. You know that a function of real variable, we give the definition of function is f is a rule which assign element of a set A to every element of set A to a unique element of B. Then that rule or relation is called the function. यहाँ पर भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है, अभी हमने यही बताया. बट यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है, इसको हम बस जनरली जो है कॉल करते हैं क्योंकि फंक्शन जैसा दिखता है, इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इट इज कलेक्शन ऑफ सेवरल फंक्शन. सो मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है? इफ फॉर एवरी जेड इन डोमेन सेट, फॉर सपोज दैट f is a function from s to s star, both are the complex set of complex number. Sorry. If for every z in this s we have unique image fz in this s star, then we say that function is single valued. Function is called single valued. Actually यही function ही होता है. Single valued means function है. It is single valued. But if corresponding to every z
if image of every z in this S has not a unique image in this S star, या एक से ज्यादा इसकी वैल्यूज मिलती हैं, एक fz की जो वैल्यूज है वो यूनिक w नहीं, कई वैल्यूज मिल जाती हैं. If for every z in this S there exists a unique image in w plane, then fz is called single value. But if for every z in this D we get more than one value of fz in S star, then it is called multivalued function. So it is called multivalued function. For suppose that example of this type of function is wn is equal to z, or w is equal to z to power 1 by n, where this n is a positive integer. N is a positive integer. This n is a positive integer. So this type of function is called multivalued function. Why it is called the multivalued function? Because you know that complex variables के roots find करना, you already know about finding the roots of complex number. जानते हैं ना इसके बारे में? 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा. Rule of roots of a complex number. De Moivre theorem का यूज करके. You know that, or suppose that यहाँ पे w is equal to z1 by n, n is a positive integer. Okay, you know that if we are writing this z in polar form like this, r cos theta plus I sin theta. So z to power 1 by n must be r to power 1 by n cos theta plus I sin theta to power 1 by n, which can also be write as r. In place of r, we can also write mod z cos theta plus 2k pi upon n plus I sin theta plus 2k pi upon n, where this k takes the value 0, 1, 2 up to n minus 1. So this w, it is w, which was w was f of z. So for a single z, for every z in S, for all the z in S, you have a w. W can takes n values. Corresponding to k is equal to 0, we will get our w, say that it is w1. And corresponding k is equal to 1, we will get another value of w, which is w2. In the same way, corresponding to k is equal to n minus 1, we will get wn. So here totally we are getting n value corresponding to each z in S. So यहाँ पे unique value नहीं मिल रही है, we are getting multiple values. That's why it is called the multivalued function. Okay, it is called the multivalued function. Is it clear? Because yes, ma'am. it is a very important topic, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे. लॉग फंक्शन जो होता है वो भी हमारा मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. तो अभी तो खैर हमने इसके बारे में बात की है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और बताना है मुझे. So w1, w2, wn. So corresponding to every z, we are getting n values of this w. So basically it is not a function, बस इसको इस concept को हम multivalued function कहते हैं. Because अगर हम z का जो हमारे पास इसका जो डोमेन है, जो डोमेन S है हमारा, if we restrict a domain, if in somehow we will find a rule to restrict this S, and every restrict portion, इस जो S है इसके पोर्शन इस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट करें या पार्ट करें कि इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन fz टेक्स ओनली वन वैल्यू. मतलब S को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दें
कि उस रिस्ट्रिक्ट पोर्शन में fz हमारा केवल एक वैल्यू ले, आइदर w1 r w2 r w3 एंड wn. तो this will behave, this function will behave like a single valued function. So यहाँ पर we can take it like a multiple valued function. If we are restrict the domain, so in that case this multi-valued function will behave like a single valued function, and each of the single valued, अब जैसे यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट इस तरह से कर दिया कि उस डोमेन के अंदर fz की वैल्यू केवल w1 ही रहेगी, w2 नहीं हो पाएगी, कि इसी तरह हम कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि fz की वैल्यू w2 हो पाए और कोई वैल्यू इसमें से नहीं ले पाएगा. तो अब ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ दिस s. So this and each function, each values of this w is behave like a single valued function then, and this values w1 is single, each one of these single valued function is also called branch of multi-valued function. This is called each, यहाँ पे w1 अपने आप में एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, w2 इस अलग वैल्यू है, इसको भी हम बना सकते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह. So all of these single valued function is called branch of multi-valued function. Branch of multi-valued function. Multi-valued function. Okay. So आज हम इसको अभी रहने देते हैं, किस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसका एग्जांपल ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करके समझाते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे. कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके यहाँ पे n की एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करके उस एग्जांपल के जरिए हम बताएंगे किस तरह से हम वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवर मल्टी वैल्यूड फंक्शन. वी कैन रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, then our multi-valued function in that restricted domain will behave like a single valued function. Okay. हेलो मैम. Yes. मैम ECA में कुछ बच्चे ऐड हुए हैं ब्रांच स्लाइड करके, तो मैम क्या आप उनको टीम्स में ऐड कर लेंगी प्लीज? टीम में उनको ऐड करना है? यस मैम. तो उनके MS टीम आईडी का जो है वो मैसेज इसमें डाल देना चैट में, तो ऐड कर देंगे. मैम या तो हम टीम आईडी दे देना, टीम आईडी है तो दे देते हैं, उससे आप उन लोगों को बोल दो, वो कर लेंगे अपना ज्वाइन, है ना. मैम ये आप टीम्स पे मैसेज कर दूं आपको या फिर व्हाट्सएप पे, कहाँ पे? रुको मैं अभी यहीं पे कर देती हूँ, एक सेकेंड, चैट बॉक्स में डाल देते हैं ना. ओके मैम.